Glory be to Allah Ta'ala Jalla Jalaluhu, who is the most omnipotent, omnipresent, benevolent, and merciful. Good morning, students. Today I shall teach you the chapter The Man Who Was a Hospital. This chapter is written by Jerome K. Jerome. Well, first of all, I shall tell you the summary of this chapter, and then we shall discuss the questions. You are fully allowed to ask any question. Okay, it's a humorous essay written by Jerome K. Jerome. Humorous कहते हैं मज़ाहिया को. The writer describes his adventure in a funny way. He tells that once he was reading a liver pill circular. वो बताता है कि एक दफ़ा वो जिगर की बीमारी के बारे में एक इश्तिहार पढ़ रहा था. When he suspected, और उसको शक सा हुआ that his liver was out of order, कि उसका जिगर खराब हो गया. He went to library and museum to study the details about liver disease. लाइब्रेरी चल पड़ा, म्यूजियम चल पड़ा कि इस बीमारी की डिटेल पढ़े. He studied the symptoms. उसने बुक खोली और उस जिगर की बीमारी की अलामतें पढ़ी. And he came to know, उसे पता चला that he was suffering from that disease, कि वो तो उस बीमारी का शिकार हो गए. He studied further one or two diseases. उसने एक दो और बीमारियां पढ़ डाली. And he was surprised, और बड़ा हैरान हुआ to know that he had those all. तो उसको तो वो बीमारियां भी हो गई. तो उसको वहम सा हो गया, शकी हो गया. Thinking something, he began to read the diseases alphabetically. तो उसने सोचा मैं सारी बीमारियां अल्फाबेटिकली पढ़ डालूं. Okay. Up to now, is there any problem? Is there any question? Okay. He came to conclude that he had all diseases except housemaid knee. तो उसको पता चला कि मुझे तो सारी बीमारियां हो गई हैं सिवाय घुटने के दर्द के. And he tried to accept that fact, और उस हकीकत को मानने पे मजबूर हो गया कि उसको सारी बीमारियां हो गई. Rather being worried, he began to think himself a valuable asset for the medical students. उसने सोचा कि मैं तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुफीद साबित होगा. मेडिकल स्टूडेंट्स मुझे देख लेंगे और मुख्तलिफ बीमारियों की डिटेल उनको पता चल जाएगी. क्लियर? अब तक को मसला तो नहीं? No, sir. Well, Afzal, we are revising the summary. Yes, sir. Rather, it's better कि you should revise. आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लें और बाकी स्टूडेंट्स को समरी भी सुनाएं. ये सुनाएं, शाबाश. He starts this no. जी स्टार्ट से सुनाएं. One day, right, reading the liver disease circular, he read symptoms of liver disease. He recognized that he had liver disease. To confirm this, he read other books
He went to the British Museum library to read more books about liver disease. He read these books and then he know that he न्यू actually न्यू had नो की दूसरी फॉर्म बेटा न्यू होती है. नो, न्यू, he, नॉन. yes, जी yes. बेटा. Then he read more books about other diseases. Read, Then read, he read. Okay, he then read. he read जी, other books about more diseases. good. Then he surprised that he had many diseases. Yeah, he was surprised. Good, He good, was surprised that he had many diseases. good attempt, good attempt. Shabash. Well, then what happened? उसके बाद सर he knew that he found himself as a walking hospital. Good. That's good. That's good. Well, he thought that he must have been a hospital in himself. तो उसने कहा मैं तो चलती फिरती Yes, sir. अस्पताल हूँ. उसको वहम वहम हो गया ना, शक पड़ गया बेचारे को. So he became Yes, victim sir. of anxiety. He became victim of depression. Depression. So he would be a hospital in himself. तो उसने कहा मैं तो चलती फिरती अस्पताल हूँ. And the medical students would have to go around him and take their diplomas. उसने कहा मैं हॉस्पिटल जाता हूँ और मेडिकल स्टूडेंट मुझे देखेंगे और अपना No डिप्लोमा ले लेंगे. diploma. Well, so he went to the medical man. वो बाकी डॉक्टर के पास पहुंच गया and told him the whole situation. तो उसने बताना शुरू कर दिया कि मुझे कॉलरा भी हो गया है, मुझे टाइफस फीवर भी हो गया है, मुझे whooping cough भी हो गई है. बस एक बीमारी नहीं है, वो है housemaid's knee. Well, the doctor examined him. डॉक्टर ने उसको चेक किया and told him, उसको बताया that there was nothing to worry about. उसने कहा जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. He was quite physically fit and okay. He gave him the prescription and asked him to leave. तो उन्होंने मेहरबानी करके अब तू जा, ठीक है, मैंने बाकी पेशेंट्स देखने हैं और मेडिकल क्लास पढ़ानी. Well, are you understanding? Yes, sir. Well, then he went to the chemist. वो सीधा केमिस्ट के पास गया with the prescription. उसका उठाए उठाए पहुंच गया उसके पास and gave the prescription to the chemist. The medical man read the prescription. उस फार्मासिस्ट ने या उस केमिस्ट ने उसका देखा and handed it back to him. तो उसने उसका वापस थमा दिया and saying that he couldn't oblige him. तो मैं आपको खुश नहीं कर सकता, मैं आपको खुश नहीं कर सकता. उसने कहा इसमें तो मेरे मतलब की बातें हैं ही नहीं लिखी हुई. Well, the chemist told him that he did not keep the things written in the prescription. तो उसने कहा इस नुस्खे में जो कोई लिखा हुआ है वो मेरे पास नहीं है. The writer read the prescription. राइटर पहले तो वो नाराज हुआ. उसने कहा कमाल है भाई, तेरा मेरा को मजाक है. मैं आपके पास आया हूँ दवाई लेने, मुझे दवाई दो. उसने कहा भाई आप पढ़े लिखे आदमी लगते हो, आप खुद नुस्खा पढ़ लो. अब जब राइटर ने नुस्खा पढ़ना शुरू किया तो उस पर क्या लिखा हुआ था कि Beef steak. बीफ स्टीक के It's जनाब all. टिक्के खाओ और Yes, sir. एवरी 6 Wow. आवर, हर 6 घंटे बाद खाओ. 10 Yes, miles walk every morning और रोज 10 मील yes, वॉक sir. करो और बेड एट 11 बजे सो जाया करो एवरी नाइट. Every night. बी पंक्चुअल, बी रेगुलर. और ये आखिरी बात बड़ी शानदार है, डोंट स्टफ योर हेड विद थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड. You don't understand. अपने दिमाग को उलट पटांग चीजों से मत करो, बस अपने काम से काम रखो.
Well, that was the summary. Okay, now let's discuss question answers. सर ये अपने काम से काम रखो, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? Okay, mind your own business. Mind your own business. पे अपना जो आपका काम है उसके मुताबिक चलो, अपने रुझान के मुताबिक बात करो. Okay, is it clear up till now? यस सर. Okay, now let's discuss question number 1. Question number 1 is, how did Jerome come to suspect that his liver was out of order? उसको कैसे शक पड़ा कि उसका जिगर खराब है? Then he was reading the liver disease circular. हाँ, इसका जवाब यहाँ से शुरू करें कि Jerome suspected that his liver was out of order when he started studying a patent liver pill circular and concluded that his liver was out of order. ठीक है, इस तरह Yes. मतलब speak logically, right, rationally and logically, then you will get better marks. Okay, question number 2 है बेटा कि what was the disease he discovered he did not have? इसका जवाब दें शाबाश. And the disease which he had not was the housemaid's knee. Shabash, good. And he was much disappointed for not having it. क्योंकि ह्यूमरस ऐसे है ना, मजाहिया ऐसे है, तो उसने बड़े फनी वे में लिखा है कि वो इस बात पे परेशान हो गया कि कमाल है, बाकी बीमारियां हो गई हैं तो ये क्यों नहीं हुई. Well, next question is, well, describe his visit to the medical man. Describe his visit to the medical man. इसका क्या जवाब होगा? He went to the medical man and told him all his problem. Medical man recognized his matter and he checked them completely. He checked them completely and he checked him completely and he hit over his chest and head. He hit over his chest and head and then gave him a prescription. Yes. Okay, then question number 10. What's the significance of a doctor's advice? You don't stuff your head with things you don't understand. What's the significance? इसकी क्या अहमियत है? It means that we should work only which we can do. Yeah, one should work according to one's aptitude and सिर्फ वही काम करना चाहिए जो हम कर सकते हैं. गुड. इस एडवाइस की इसलिए अहमियत है कि उसने कहा भी अपने दिमाग को उलट चीज़ों से मत करो और जो आपका फील्ड है उसके मुताबिक चलो, अपने रुझान के मुताबिक चलो. तो इसका जवाब हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस because some people start to think about those things for which they have no concern. So as a result, they draw a false conclusions and get worried. Well, the doctor, the writer followed the advice of the doctor and he became healthy. Clear? Yes, sir. Well, is there any question? No, sir. Well, I expect that from tomorrow we will study next chapter, inshallah. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.